Welcome to Interview Cracker. This is Saurabh. Today I will discuss about efficiency of an algorithm. We already discussed in the previous lecture what is algorithm and data structure and how we implement the data structure in different models. Now today lecture we understand that efficiency of an algorithm. Efficiency of an algorithm it depends on two things, that is the time complexity and the space complexity. Time complexity defines the time required to execution a particular program, and space complexity means particular program if we store in our computer or secondary memory, then how much space it is required. So that is the time complexity and the space complexity. The problem is that here if we think about easily, we think about that the efficiency of an algorithm, हम एक एल्गोरिथम लिखते हैं वो उसको एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर देते हैं. तो इसमें क्या होता है दोस्तों, डिफरेंट जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है, उसका जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर्किटेक्चर होता है वो डिफरेंट कंप्यूटर में डिफरेंट है. तो अगर हम वही सेम एल्गोरिथम को डिफरेंट प्लेटफॉर्म में रन करेंगे, डिफरेंट आईडी डिफरेंट टूल्स में जो प्रोग्रामिंग टूल्स है उसमें रन करेंगे, तो इसमें डिफरेंट एग्जीक्यूशन टाइम आपको मिलेगा. तो इसको हम कंसीडर नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए जो एल्गोरिथम का जो इफिशियंसी का जो कैलकुलेशन है, जैसे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का जो आर्किटेक्चर है उसको कंसीडर नहीं करते हैं. तो यही इसमें लिखा है दोस्तों. देखिए ये जो एनालिटिकल मेथड है इसमें हम जनरली इनपुट साइज को कंसीडर करते हैं. Before we go to the analytical method, first we see two algorithm for the same task. That is the task for the same task we use. There are many solutions. We take here two solutions, that is algorithm 1 and algorithm 2. And the task is here, that is the we understand calculate the largest number among three. तो इसमें देखिए दोस्तों, पहले स्टार्ट है एल्गोरिथम लिखा गया है दो ठो. ये एल्गोरिथम 1 है ये वाला, ये एल्गोरिथम 2 है. तो इसमें लिखा है स्टार्ट इनपुट 3 नंबर एंड देन एल इक्वल टू नंबर 1 एंड नंबर 1 कंपेयर टू एल, दैट मीन्स नंबर 2 कंपेयर टू एल, दैट मीन्स नंबर 1. इफ नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 2 इज इन एल, and if number 3 is greater than L, then number 3 is the largest number. That is there are two comparison is present here, and if you take that algorithm, then if you consider the number 1 greater than number 2 and number 1 greater than number 3, condition is true, then number 1 is the largest number, and so on. And if you take that algorithm, you see that here number of comparison in each 6. There are two parameters here considered, that is the comparison and the assignment operator. Assignment. So if you go through the algorithm 1, then you understand that two comparison are needed and 3 assignment is required, and for the algorithm 2 6 comparison and 6 assignment is required. So इसमें पूरा क्लियर हो गया दोस्तों. अगर दो ठो एल्गोरिथम आपको दिया जाएगा तो आप बेटर कौन सा है, इससे हम इफिशियंसी से हम अगर मेजरमेंट करेंगे कंपैरिजन एंड असाइनमेंट से, तो इसमें जो एल्गोरिथम 1 है ये क्लियरली इट इज द बेस्ट एल्गोरिथम इफ यू कंपेयर टू एल्गोरिथम. बट द थिंग इज दैट फॉर द एनालिटिकल मेथड इज डिफाइंड द बेस्ड ऑन द इनपुट साइज and also the comparison and assignment operator are used to measurement the efficiency of an algorithm. So it does not depend on the software and hardware, and it use some asymptotic notation to measure the efficiency of an algorithm. तो अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जनरली जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है इसमें हम कंसीडर करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम कंसीडर करेंगे तो इससे हम देखेंगे दोस्तों, इसमें दो ठो एल्गोरिथम का कुछ इनपुट साइज से लिखा गया है कि किसको कितना एग्जीक्यूशन टाइम लगेगा. तो अगर एल्गोरिथम 1 एल्गोरिथम ए को देखेंगे तो अगर इनपुट साइज 3 है, जैसे इधर इनपुट साइज 3 है, इस इनपुट साइज 3 में हम इसमें बोल पाएंगे जो एल्गोरिथम 1 इज बेटर देन एल्गोरिथम 2.
for the input size 3. But if you consider more, if you increase the input size, then when the input size is 100, then that time also algorithm A is better than algorithm B. Then we conclude that algorithm A is better than algorithm B. That means it's mainly depend on the efficiency of an algorithm. It mainly depend on the input size.